Hello everyone, my name is Tarun. You all know me and कोविड-19 एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे हम लोग लड़ रहे हैं बहुत समय से हमें समझ में नहीं आ रहा है कैसे इसका सोल्यूशन होगा क्या होगा रशिया इज सेइंग दैट दे फाउंड अ वैक्सीन पर बाकी की सारे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज सेइंग कि भाई रशिया का कोई भरोसा नहीं है वो लोग कुछ भी बोलते हैं कुछ भी करते हैं बट इन द मीन टाइम बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे कंट्री में एंड इनफैक्ट हमारे शहर पुणे में दे आर फाइटिंग बाय ऑल मीन्स पॉसिबल one of them is Khadija Chunawala, who reached out to me, who said कि Tarun, we're doing something and we want some help and we've been helping a lot of people, पर इसमें ज़्यादा लोग अगर साथ में आ जाएं तो कुछ बात बन सकती है. And we also have Ashish Bhartwal with us, who is an IT professional, और वो भी इस मूवमेंट का हिस्सा बन गए हैं और ऑफ कोर्स ही वाज हेल्प्ड बाय दिस होल थिंग. तो ये सब कैसे शुरू हुआ उसके बारे में बात करेंगे और आप कैसे इसमें हेल्प कर सकते हो उसके बारे में बात करेंगे. और ख़ास तौर पे ये जो कोविड-19 को लेके जो सोशल स्टिग्मा है ना कि मुझे बताना नहीं है कि मुझे कोविड-19 हो गया है, दिस इज़ व्हाट वी वांट टू एड्रेस टुडे. बट फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, वेलकम टू द शो. हाय. हेलो. हाय तरुण. हाय तरुण. बाहर जा रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, कांटेक्ट कर रहे हो इतने सारे लोगों को कि भाई आपकी हेल्प चाहिए हमको. आप अपने बारे में डर लग रहा है आपको या इज एवरीथिंग ओके? हाउ आर यू टेकिंग प्रिकॉशंस? No, precautions are definitely there, but डर नहीं लग रहा है because we know it's curable. It's curable unless you are not fit first of all, and उसके अलावा see there is a solution to everything. I mean, if you want to fight it out, so I don't understand why people are just getting. It is something to worry about. You have to take your personal care, लेकिन जो इतना हाइप अप हो रहा है वो थोड़ा खुद तक रखे, नॉट स्प्रेड इट. हाँ, अवेयरनेस से बचाव हो जाता है. अगर आपको पता है कि इससे कैसे डील करना है तो बहुत सारा जो स्ट्रेस है वो कम हो जाता है. नाउ बोथ ऑफ दीज पीपल दे आर अ पार्ट ऑफ अ फिटनेस कम्युनिटी, सो दीज आर वेरी फिट पीपल. और अभी हम लोग बात कर रहे थे ऑफ द एयर, तो ये लोग बता रहे थे कि 8th of March को was when they met in a convention जहाँ पर कुछ फिटनेस रिलेटेड हो रहा था, पावर लिफ्टिंग हो रहा था, एंड दैट्स द लास्ट टाइम देव गॉन टू अ जिम. So as people who are very fitness conscious, you must be missing gymming a lot. Of course. I mean that is the only fond memory of gym that I have now. Like it was somewhere in Camp Khadija. I don't remember the name of the gym. And yeah, so and I was lucky enough to win something over there. So और उसके that's my बाद only से it has all gone downhill from there. बहुत सारे problems हुए. It has not gone down as such in terms of fitness. We have been working out and taking care of our nutrition even at home. So I will say that we have discovered new aspects of fitness while being limited to a 2-bedroom apartment and still being able to maintain everything, at least not the strength part, but yes, we have taken good care of ourselves. Now, I meant in terms of being able to go out and being in presence of other people and socialize and do things like that. That is and Facebook actually. That's like we have to wait for that still. I think socializing, everyone is missing that part. Traveling, going out, basic freedom. So still. So हुआ ये कि कोविड-19 के टाइम पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी. कोविड इज अ प्रॉब्लम, द डिजीज इन इटसेल्फ. उसके अलावा बहुत सारे सोशल प्रॉब्लम्स हो रहे थे. बहुत सारे लोग क्योंकि देवर स्ट्रैंडेड इन अ बिल्डिंग, घर पे, घर से दूर, अकेले थे, तो धीरे धीरे इन लोगों ने शायद हेल्प करना शुरू किया. खदीजा, क्या हुआ, बताओ कैसे, हाउ डिड यू स्टार्ट हेल्पिंग पीपल? Okay, so the lockdown happened somewhere on the 22nd of March. It was just so sudden and we had no clue. Now the ones who had resources उन्होंने सब कुछ करके रखा था, बाकी नहीं था. So हमारे groups पे आया, like our community is big, they first thing they did was they made COVID groups. Okay, so we had COVID groups all over. Each member, like we have lakhs of members and millions of them, and they're all in a part of some of the other COVID group. उसके अलावा we have these अथर्वानी, better world
groups on WhatsApp for each city. Each city has an admin, and we were all like, we were all working towards कि किसी का भी call आए, कुछ भी आए. Then our numbers were on internet, on Facebook and wherever possible. So people were calling us up, ma'am खाना arrange कर दो. Now for that matter, a rickshaw wala, he calls me up, he says, ma'am नहीं है, कुछ नहीं है, जैसे रिक्शा स्टार्ट होगी दे देंगे, अभी आप हेल्प कर दो. And I'm like, what? I very well remember I served him somewhere around 2,780 rupees का राशन, to be very precise, for which जिस बंदे को भेजा था, मतलब उसके एरिया में, उसके पैर छुए. Okay, and that fellow told me, ma'am, उन्होंने मेरे पैर छुए. I felt so bad, but for that 2,700, जो most of us actually के लिए living a stable life is nothing, but that fellow, उसके अलावा immediate next day a garden wala called up. He said, I want to do the same. I don't have money to even feed my, because mandir band hai, sab kuch band hai. And that way we went out of our way to make sure that they are getting. There was a family who was stranded. They were the caretakers of a particular farmhouse in Yevar. No, Yevar, I don't know. Somewhere Udri के आगे था कुछ तो भी. So they were, और वो जो ओनर थे उन्होंने उनको सडनली निकाल दिया कि अब तो 1 साल मेरे को नहीं लगता कोई आएगा, कुछ रहेगा, तुम लोगों का पगार तुम लोगों को ब्रिंग करके मैनेज होगा. देयर वाज अनदर फेलो हु एक्चुअली टुक ओवर देम, जो फार्म हाउस में था उनको रखा, बट ही वाज सेइंग, मैम आई हैव लॉट ऑफ लायबिलिटी, आई कैन गिव देम समथिंग टू स्टे, बिकॉज़ अभी वो लोग जाएंगे कहां, आई नो इफ यू कैन अरेंज फॉर देम. सो दो, मतलब बहुत सी बार ऐसा हुआ. We over here, we had a stack of, Diet Pepsi, Diet Coke, Rani, बच्चे लोग के, everything was like stocked up, and some people kind of, so it was for me, आधा खाना वही पर देकर बंद हो गया. हाँ, बहुत एक बहुत बड़ी बात जो हुई है इस पूरे सिचुएशन में, हमारी आंखें खुल गई हैं towards the disparity that we have in our society. एक तरफ ऐसे लोग हैं they don't have to go out of their homes at all and they will still be able to live a very comfortable life, and then on the other side there are people जो अगर एक दिन भी अगर नहीं कमाते हैं तो उनकी पूरी जिंदगी रुक जाती है, खाना पीना जैसी बेसिक चीज़ें भी उनकी रुक जाती है अगर एक भी दिन काम ना करें. एंड इट्स बीन more than 3 months now that a lot of people have not worked. We are in a city जहाँ पर पुणे में numbers are increasing like crazy. So kudos to you and the whole community for helping so many people, first of all. लेकिन आपकी एक और बात बढ़िया है कि आपने जो अपने एफर्ट्स थे उसको खाना पीना छोटी मोटी चीज़ें अवेलेबल कराने तक लिमिटेड नहीं रखा. You started sourcing something that is almost saving somebody's life right now, which is plasma. Now, since we have a lot of people who are suffering from COVID, we have a lot of people who are possible probable donors of plasma as well. तो ये how did you start finding people and वो donors और recipient कैसे, ये सब में how did you get into all that? Okay, so July में we saw that people were coming to us कि उनको वो vaccine, वो injections चाहिए थे that could like work on people. Now those were expensive ones. Some were 38,000, some were 4,000, some 6,000. उसके अलावा they were going black में. I don't know if you know. Yeah, they were not going on natural price. So वो भी डिफिकल्ट हो रहा था टू अरेंज. एक बंदे के लिए हमने अरेंज किया पनवेल से, एक के लिए उल्लासनगर से, लेकिन वी ट्राइड आवर बेस्ट. बट जुलाई में आई हैव एन अप्रोक्सीमेट काउंट कि 11 days में वी लॉस्ट 18 people who came to us for help. I didn't know them personally though, but we have a database kind of where they came to us, and but finally they passed away. Okay, suddenly there was a point where a very close relative of mine in that state, she was a 70-year-old lady, and I wanted to. अब मैंने सारे के सारे ब्लड बैंक देख लेते. इवन व्हेन यू एक्चुअली गो टू द ब्लड बैंक्स यू रियलाइज दे गिव यू अ नंबर, तो आप लाइन में खड़े हो, तो बाय द टाइम आपका नाम आता है तब तक दैट पर्सन इज डन विद इट. आई मीन यू कांट सी 4 days 5 days 6 days बिकॉज़ देयर आर हंड्रेड्स ऑफ वेट्स. तो देन मेरे को पता था कि यार इतने दिनों से 18 लोगों को तो देख लिया और ये बंदी को तो आई कैन नॉट अलाउ हर टू. So खुद के हाथ से थोड़े बहुत मारे. I went to people personally, call them up. I said I will pick you up, I will drop you, I will give you money also. बस इसको प्लाज्मा दे दो, कवर्ड हो.
तो वैसे देखने गए तो 3 लोग तो इमीडिएट मिल गए. She was in KEM. We fed her with whatever she was requiring. उसके बाद भी हमारे पास प्लाज्मा बच गया, जो एक दूसरे अंकल को भी दे दिया, एंड वो भी बच गए. Even he was critical. So I was thinking this is very simple. मतलब I just have to go and pick up people instead of going and tapping blood bank or something. So personally started tapping. फिर हमारा ग्रुप है, we are almost 114-15 of us, where Ashish is also there. So उस पर डाला कि each one brings one person. We have a database of 100 people. हम लोग दूसरे 100 को तो easily बचा सकते हैं. Let's start. तो जब start किया तब even I wasn't sure how far it's going to work. But that particular day when we started and today, I think nobody who's gone unattended. We've been able to everybody. Wow. There are some people who call us up and they keep us like कि हमको कोविड हुआ है मैम, स्टैंड बाय पे रखना. हाँ मैम, मेरा मतलब उनको इतना भरोसा होता है कि ये लोग कर लेंगे. बट मैम मैंने आपको पहले बोला था. लाइक नाउ दे आर सो यूज्ड टू द प्रोसेस कि लाइन में खड़ा होना पड़ता है या, बट अपने पास वो तो सिस्टम है नहीं है. whoever is coming and we have somebody at a point we got requirement of positive blood for 4 people. Okay, and it was like okay, 3 को कर लिया, एक के लिए नहीं था. Now that one person, his mom was in a particular hospital, dad in another hospital, so we didn't know. तो मैंने उसको बोला कि अब एक काम कर, एक दूसरे का ढूंढती हूँ. He's like मैम ऐसे कैसे, दो था क्रिटिकल. ऐसे तो अब एक को देना. I mean you decide अब किसको देना है. मेरा भी दिमाग आउट हो गया था, या पूरी रात लोगों को कॉल करके कन्विंस करो. तो ऐसे अभी किसको एक को देते जिसको इमरजेंसी है, दूसरे का मैं करती हूँ, तू रुक. तो बोलते हैं मैम अम्मू अभी नहीं, क्या अम्मी एंड अब्बू में से कैसे चूज करूँ? How can you choose between your father and your mother? So I was like, okay, now this is critical. Then I called up in Pune hospital. I said, look, because we knew कि Pune hospital के पास B positive था वो टाइम पे. ओके, पूरी स्टडी करके रखी थी, बट दे डोंट गिव इट आउट. सो मैंने उनको बोला कि हमारे पास ए पॉजिटिव है और ये ओ पॉजिटिव है, अब ये दो लो और मेरे को ये दो. तो फॉर अ मोमेंट दे वर लाइक व्हाट यू डूइंग, यू ट्रेडिंग व्हाट. लेकिन आजकल ये भी ट्रेडिंग हो रहा है, ऐसे जो भी समझो, बट मेरे को ये करके दे दो तो ये ये बंदे का हो जाता है. that's when आशीष का फ्रेंड्स ग्रैनी वाज अ पार्ट ऑफ इट. तो उनको तो दे दिया बिकॉज शी वाज वेरी क्रिटिकल. बट तब ही ये दोनों भी थे एंड आई हैव नो क्लू व्हाट टू डू. आई वाज सो हेल्पलेस कि मेरे को लगा चलना देखने तो वो मेरी कहाँ रिश्तेदार, उसके साथ भी बार्गेन करके देख लेती हूँ. तो पुनः वाज वन give me what I require. She said okay, and that's how. And then I told her, I said, you know what, let's come up. Whatever I have, I will send you. Whatever I need, you give me, and let's thing where we can help people. It's about finally helping people, and she agreed to it. So आशीष भी आपके साथ बहुत काम कर रहे हैं. ही इज बीन इन्वॉल्व विद यू. पर आशीष ये बताइए कि फिर ऐसा हुआ कि आपको भी आपकी ग्रैंडमदर के लिए इसकी जरूरत पड़ गई थी, है ना? ऐसा कुछ? मेरे एक फ्रेंड हु वाज माय जिम ट्रेनर actually, so I got to know that 9 family members got positive, and his 9. entire family was in a hospital in Hadapsar somewhere. So I got that news, and then I tried to reach out to him, like if he wanted some help. And then that time he said like his dad and his grandmother both were in ICU, and grandmother was a little bit critical, and she needed plasma, and that's where I contacted Khadija, and I think within hours it was sorted out, and that guy was so thankful. He said like, this girl has come like an angel in my life, and she's literally saved my grandmother. And Khadija, just for you to know that his grandmother just tested negative yesterday. Wow. And will be discharged tomorrow. Wow. Yeah. Wow. I just spoke to him before this. I'm getting goosebumps listening to this. Yeah. So and there have been like other stories also, like where people have been in need of this plasma, and even my friend was telling me that
people are actually selling plasma. अरे And बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं, मुझे वाकई मतलब अब देखो ना, हमारे शहर में वी आर सीइंग दीज नंबर्स एवरी डे कि आज 1,000 लोग पॉजिटिव है, 2,000 लोग पॉजिटिव हैं, नंबर हैज गॉन अबव 1 लाख, विच मीन्स अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव बीन रिकवर्ड ऑल्सो। मतलब वो सारे yes, के सारे लोग दे हैव एंटीजेंस और वो लोग डोनेट कर सकते हैं, पर फिर भी सोशल स्टिग्मा एक ऐसी चीज़ है जो हमको लोगों, बहुत सारे लोगों को, पढ़े लिखे समझदार लोगों को भी डर लग रहा है ये बताने में कि आई वॉज टेस्टेड पॉजिटिव, इवन आफ्टर देव बीन नाउ रिकवर्ड एंड दे हैव बीन टेस्टेड दोबारा से और फिर नेगेटिव आया है उसके बाद भी। इनफैक्ट वी वर ट्राइंग टू कॉल इन समबडी हु इज़ अ डोनर, और वो हमको नहीं ज्वाइन कर पाए बिकॉज ऑफ सोशल स्टिग्मा कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे। तो खदीजा, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दिस होल थिंग कि हो चुका है लोगों को पर फिर भी वो एज अ डोनर सामने नहीं आना चाह रहे हैं बिकॉज दिस स्टिग्मा? They are all ready to help, they are not getting back or not helping, okay, but the fear is actually some, everybody has their own reason. नहीं 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 मैम, सोशल मीडिया पे नहीं बोल सकते, ऐसे हुआ है, नहीं 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 मैम ऐसे नहीं कर सकते, like you know, some people backed out, like I don't know, for reasons I don't know even what to say because I don't want to open it up, but I think it's nothing wrong in even accepting that you've gone through something like this. Like for that matter, me, मेरे को लगता है last 3 months में मेरे को 4-5 बार हो गया होगा. but looking at the brighter side of it, let's say, I mean, at least people in this community to whom we are able to help now. So the expectation is very clear that if someone needs plasma from a recovered patient, so we can directly reach out to them because we have a first-hand experience of helping them. So for example, for this friend of mine, it was very clear from day one that I told him very clearly that 9 of you guys, okay, and at least 5 out of those 9 are like really young people. Right. So I told, this is like, it's, I'm not saying that it was a barter kind of thing, but it was more like we help you, you help others. So it's as simple as that. Right. And that's how we help. I mean, that's how we will be able to make some impact in the community. और अगर कोई कम इन्फेक्शियस है इन द होल वर्ल्ड, जो लोग जिनको एक बार हो चुका है, रिकवर हो गए, दे आर द लीस्ट infectious now, they are the safest people for others and for themselves. That is for the next 4 months, after, for the next 4 months. Hopefully उसके बाद हमारे पास वैक्सीन होगा because we have Serum Institute in Pune जिनके अभी ऑलरेडी 3rd फेज के ट्रायल्स शुरू हो गए हैं ब्राज़ील में, और इंडिया में भी 2nd फेज के ट्रायल्स उनके चल रहे हैं. इनफैक्ट देयर वाज अ वेरी बिग प्रेस कॉन्फ्रेंस येस्टरडे, तो 2-3 जो कंटेंडर्स हैं फॉर दिस वैक्सीन इंडिया में, उसमें से दे आर सेइंग दैट सीरम इज़ वन ऑफ द टॉप कंटेंडर्स. और मैंने डॉक्टर साइरस पूनावाला को एक इंटरव्यू में कहते सुना था कि अगर कुछ भी होता है तो हम पुणे का ध्यान, for God's sake, his name is Poonawala, he has to do something for Pune. So he's saying जो ज़्यादा critical लोग होंगे और पुणे में we will definitely, because the numbers are so high, we're going to help. But in the meantime, Khadija needs help. She is actually making a registry जहाँ पर वो बहुत लंबी लिस्ट बना रही है लोगों की जो प्लाज्मा डोनेट करने के लिए तैयार हैं. तो ये जो वर्ड है, this should go out to as many people as possible. Khadija, what is the message that you want to give away? Please come forward. Let's help people. If you've gone through it, I'm sure you know how it feels. Okay. बहुत से लोग हैं जो we have seen in the last 3 months, we have seen them dying. I think Ashish also will agree to it कि हमारे ग्रुप पे आता था कि एक requirement आती थी and immediately within a few hours that person is passed away, or then maybe in a day or two, and we were so helpless. Now as we found out what we one more topic that I would want to bring up is, if you are not already aware, Tarun, how Khadija helped in cremation of a person who died from something else other than COVID, and his entire family was not here. Khadija, if you want to. Told him, that was I
the Bengali fellow who was studying here, and he was taken to Sasun, and his family wasn't here. Pura lockdown tha, and he passed away. I was the last person talking to him, so I get a call, kind of, कि आपने जिससे last बात की थी ना, वो मर गया, and I'm like, किससे बात की last? And I had spoken to him at a gap of 20 minutes. Yes. Oh. And he passed away, and he was a young fellow, and we were like, kind of कि कैसे करे, क्या help करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था. He was at a particular hospital in Pune, and we had to, then they called me up. They said, you claim the body, otherwise we'll put it in some machine, or I don't know what, we take it as unclaimed and we let it go. His parents from there kind of kept saying, we at least want the last rituals for our kids. I mean, he's been so far, and I don't know how to go about it. So approximately me and my team, we were trying for it since like till रात को 2 बजे तक बात कर रहे थे एक दूसरे से कि क्या करना है क्या नहीं. उनकी बॉडी सब कॉन्टैक्ट्स लगाकर we put it on hold. There was this another angel who came to us that time. She's also doing very good work. Okay, another friend Pallavi Jain hai. She is another social worker who does real good work. She came to me, and she did the rest. Okay, she was at my rescue. She collected the body. We cremated it. हमने उसको पूरा का पूरा सब कुछ जो भी उसके साथ हुआ वो उसके पेरेंट्स को जूम पर दिखाया. And like what, there were like kind of lot of blessings. They said कुछ नहीं हुआ सका. There was a word like from his father that we gave him birth, but we didn't know his last rituals were going to be performed by somebody who didn't know. So it was like you definitely mean something, So this was destined, like. बहुत सी चीजें हैं जहाँ पर हमने ये सब चीजें की है. And trying to do whatever possible. There was a couple, both Sayatika and Uncle Bad. उनको सिर्फ रोटियां चाहिए थी. हमारे ग्रुप के लोग हैं जो सिर्फ उनको रोटी भेज रहे थे. They said, करी वगैरह हम बना लेते हैं, but रोटी बेलना नहीं होता. So we have crazy people in our group who want to go out of their way. They said हम रोज रोटी बनाते हैं 2 लोगों की भेजने में. So they would make, and they would make sure that they would send it to them. So वैसे तो multiple चीज जो हमारा ग्रुप कर रहा है. बहुत बढ़िया. और जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपसे बस ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कोविड हुआ था और आप रिकवर कर चुके हैं, या फिर आपके किसी फैमिली मेम्बर को या आप किसी को जानते हैं जिनको हुआ था और अब वो रिकवर कर चुके हैं, प्लीज़ ये बात समझिए और उनको भी समझाइए कि अब वो दूसरे लोगों की जान बचा सकते हैं, उनको ठीक कर सकते हैं थ्रू देयर प्लाज्मा. और ये एक बहुत ही सिंपल तरीके से डोनेट किया जा सकता है. इसमें कोई ख़ास समय नहीं जाता, एंड यू गेट टू हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल. और ये काम कैसे होगा, इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट दिस, खदीजा एंड हर टीम, these guys are working day and night to make this happen. Ashish is an IT professional, but still giving time for this cause. और ये लोग लगातार लगे हुए हैं, हमेशा अवेलेबल हैं. So all you have to do is get them connected to as many plasma donors as possible. It is just a registry that they're trying to make, and then of course you can contact them for both the things, for a donor or for a recipient. और इस मैसेज को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं इस वीडियो को शेयर करके, या पर्सनली किसी को ये बात समझा के कि भाई ये स्टिग्मा वगैरह क्या है, ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो ठीक नहीं हो सकती, या फिर वो इंसान जिसको हो गई है एक बार वो ठीक हो जाता है तो ही इज़ जस्ट फाइन. प्लीज़ ये कीजिए. खदीजा, हाउ कैन पीपल गेट इन टच विद यू? On Messenger, Insta, Facebook, it's my ID is Khadija Chunawala. Simple. I mean, just put it up. Yeah. So just get in touch with me anywhere, anytime. I think you can put up my number also, Tarun. You can add it, I will add it in the caption so that people can just directly. On Facebook, if you actually go to see, it's there on the helping hand and Atharvani and everything, So people can get through me the way they like, but please you can add my number as well if someone needs any help in how this process works, and if Khadija is not able to respond sometime because she gets too many calls, I think in a day. Yeah. Kudos, guys. Kudos. Thank you so much for what you're doing. Yes. Thank you. And a word from your side.
as many as possible, please, so that people keep coming forward. More than us, maybe people look upon you and they'll listen to you and come running, Yeah. Maybe after when this all gets over, we'll sit again and probably tell more stories of saving a lot of lives and winning against this pandemic that we are facing all over the world. Thank you guys. Thank you for your time. Thank Thank you. you. Thanks for everything, Tarun. Means a Thank lot. you, Tarun, for having us here.